Good morning, class 8. Yesterday we were doing digi of chapter number 8, that was cell structure and functions. Okay, तो yesterday we have done up to structure of the cell. I hope आप सबको clear हो गया होगा. ठीक है, I have told you to read the chapter again ताकि आप लोगों को concept समझ आ जाए. I hope आप सबने chapter read कर लिया होगा. तो आज आगे continue करते हैं. So please pay attention. We'll start with cell organelles. Every living thing is made up of cells. The cells perform all the tasks involved in being alive. A cell has many smaller components. Some function as powerhouses, others as storage areas. Yet others act as gatekeepers, rows, and even as a command center. What are the different components inside a cell? Let us take a journey through an animal cell and learn some interesting facts. So about animal cell we have discussed yesterday. An animal cell is like a tiny This part we have already done yesterday. We were about to begin with cytoplasm. We will start with cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm is the jelly-like substance that flows around inside the cell. So what is cytoplasm? Cytoplasm is the jelly-like substance that flows around inside the cell. ठीक है? Jelly-like substance होता है जो कि सेल के अंदर फ्लो करता है, उसे बोला जाता है cytoplasm. Between the nucleus and the cell membrane. Cell organelles are present in the cytoplasm. So where are Why is cell organelles present? Cell organelles are present inside the cytoplasm. cytoplasm important? What is the importance of cytoplasm now? Inside an animal cell are the nucleus, mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, endoplasmic reticulum, vacuoles and lysosomes. The entire content of a living cell is known as protoplasm. Now comes the nucleus. You all know about nucleus now? The nucleus is present in the center of the cell. It serves as the information processing and administrative center. The nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. On this, many ribosomes are attached. The nuclear envelope is perforated. The pores regulate the passage of molecules. So nuclear membrane porous क्यों होती है? The porous nuclear membrane allows the movement of materials between the cytoplasm and the nucleus. Nucleus और cytoplasm के बीच में जो materials का movement होता है, that is because of the porous nuclear membrane. क्योंकि nuclear membrane porous होती है, जिस
porous membrane acts as a gatekeeper. It permits some molecules to pass through, but not others. Let us go further into the nucleus. The structure inside the nucleus is called the nucleolus. This spherical body makes ribosomes. The nucleolus is surrounded by thread-like chromatin fibers which rearrange to form chromosomes during cell division. Chromosomes carry genes and help in inheritance of characteristics from parents to offspring. The chromosomes can be seen only when the cell divides. Next is cell organelles. What are cell organelles? Many small structures are present inside the cell. These are called cell organelles. Each organelle has a different structure and function within a cell. Those small structures inside the cell are called cell organelles. Just as a city has structures to make it run smoothly, the cell has organelles to keep it alive. Vacuoles are the storage areas in the cell. What are vacuoles? Vacuoles are the storage areas in the cell. They are used to store fats, nutrients and waste products inside the cell. The lysosomes are digestive sacs that can break down macromolecules in the cell. What would happen if there were no lysosomes? The endoplasmic reticulum is found in the cytoplasm. They form a link between the nuclear membrane and the plasma membrane. Ribosomes are small organelles that help in the synthesis of proteins. Mitochondria produce energy for the cell. तो क्लास जिस तरह से आपकी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उसी तरह ये भी कुछ कंपोनेंट्स हैं सेल के जो कि डिस्कस करे जा रहे हैं. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. They are rightly called the powerhouse of a cell. The Golgi apparatus creates and sorts molecules. All these organelles work together to keep a cell alive and healthy. Then comes prokaryotic and eukaryotic cell. इसके बारे में हमने डिस्कस करा था जो येलो ब्लॉक में था आप लोगों की बुक्स में कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, है ना. तो अब डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है. आई होप आप सब क्लियर हो इन दोनों टर्म से. Bacteria are unicellular organisms. Do they have a nuclear membrane? Let's find out. Cells with nuclear material and no nuclear membrane are termed prokaryotic cells. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? ऐसे सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल. Examples are bacteria and blue-green algae.
All organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. Eukaryotes are organisms that have a well-defined nucleus. तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर टर्म अंडर यूकैरियोट्स. सेल स्ट्रक्चर्स आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल में कैटेगराइजेशन करा गया है. एनिमल सेल्स में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है. न्यूक्लियस का क्या काम होता है, इट इज द कंट्रोल सेंटर एंड इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब आपने नहीं पढ़ा. ठीक है, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स, वैक्यूल्स इज द स्टोर हाउस. तो ये सब है एनिमल सेल के कंपोनेंट्स. तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है. उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. Here are two photographs, A and B, of cells under a compound microscope. One of these shows cells from the inner lining of our cheek, and the other is lining or the epidermal peel of a leaf. Can you make out which of these are leaf cells? Yes. Picture B shows cells of the leaf. As you can see, plant cells are larger, have a regular shape, and are arranged close to each other. These cells seem to have a rigid boundary as compared to our cheek cells. Cheek cells, on the other hand, are comparatively smaller and generally oval, but vary greatly in their shape and are also loosely arranged. Let's peep inside the cells of some plants and animals to understand similarities and differences between them. Animal and plant have some key similarities and differences. Both are living beings that carry out basic life processes. So similarities between plants and animals are that both are living and both carry out life processes. Is it clear? Such as nutrition, respiration, transportation, and reproduction. They differ in their textures, modes of nutrition. So this is the basic difference between plants and animals that has been told to you in terms of when we compare them on the basis of texture. We say that plants are rigid and rough, and on the other hand animals smooth and flexible. उसके बाद mode of nutrition, it is generally autotrophic, that is self making process है, and animals का mode of nutrition is heterotrophic, that is they depend on others. Then comes plant का level of body organization, it is tissue level, and in animals it is organ system level. Then locomotion absent, they cannot move, and animals locomotion present. So this was a basic difference between plants and animals. Levels of organization
and whether or not they can move around voluntarily. At cellular level, these differences do not bring drastic changes in the structure of plant and animal cells. Cells follow the basic structural organization in both plants and animals. The similarities at cellular level include the presence of living plasma membrane, cytoplasm, and nucleus. Cells of plants and animals are eukaryotic. That means they have a true nucleus enclosing the chromatin material. The cytoplasm in both contains membrane-bound cell organelles. This is a list of the organelles found in the cytoplasm of both plant and animal cells. That is mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, ribosome and vacuole. Let's look at some differences between plant and animal cells. If we put plant and animal cells in pure or distilled water, water begins to enter the cells. After some time, the animal cell will burst, but the plant cell will not. Can you guess the reason for this difference? The cell wall prevents the plant cell from bursting. तो क्लास क्या हुआ यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर लिया गया है. डिस्टिल्ड वाटर में क्या करा गया, प्लांट सेल डाला गया और एनिमल सेल डाला गया. And it is told to you that if it is kept for long, what will happen, that animal cell will burst and but plant cell will remain as it is. Why this is so? Because हम सब ने पढ़ा है कि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल बर्स्टिंग से प्रिवेंट करती है. ठीक है, तो सेल वॉल प्रिवेंट्स प्लांट सेल्स फ्रॉम बर्स्टिंग. इज इट फाइन? Plant cells have an additional rigid and tough cell wall enclosing the inner plasma membrane. This cell wall is made of cellulose. It is dead at maturity and helps in providing shape and support to the plant cells. Which organelles are responsible for making the plants autotrophic? Chloroplasts are the green plastids that contain the light-sensitive pigment chlorophyll. Chlorophyll has the ability to convert light energy to chemical energy. This process is called photosynthesis, and it is absent in animals. Animal cells lack plastids. This makes animals heterotrophic. तो एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए एनिमल्स क्या होते हैं आपके हेटेरोट्रोफिक. Observe the position of nucleus and other organelles in both the cells. As you can see, in the plant cell, most of the cytoplasm and the organelles are pushed to the periphery, whereas in animal cells, the cytoplasm is evenly distributed.
This is because of the presence of a large fluid-filled vacuole. See, vacuole is larger in Plant cells cells. have large and fewer vacuoles, whereas animal cells have smaller vacuoles that are scattered in the cytoplasm. Animal cells have a well-developed Golgi apparatus, where See, you can see the size of the vacuole. इसमें कितना बड़ा है vacuole, but इसमें क्या है, छोटे-छोटे scattered vacuoles हैं. whereas in plant cells, the Golgi apparatus is present in smaller units called the dictyosomes. Observe how an animal cell divides. A plant cell cannot divide this way. Why can't a plant cell divide in the same manner? The plant cell is surrounded by a rigid cell wall. As a result, the cell cannot constrict, as in the case of an animal cell. In a plant cell, first the nucleus divides into two. Then the new cell wall is laid down between the two newly formed cells. Another difference between the two types of cell is this. In animal cells, the centrosome, containing centrioles, helps in dividing the material present inside the nucleus. The centrosome is absent in plant cells. Its role is played by regions called the polar caps. So this is the difference in the cells, animal cell and plant cell. You people can note it down also. जो animal cell में size और shape होती है, that is small oval, and इसमें large angular outermost boundary plasma membrane की होती है. इसमें outermost boundaries of cell wall, plastids absent होते हैं और इसमें plastids present होते हैं. Vacuole स्मॉल होता है, स्कैटर्ड होता है और इसमें लार्ज होते हैं और फ्यू होते हैं. गोल्गी अपैरेटस उसमें वेल डेवलप्ड होता है. आप ये वाला पॉइंट छोड़ सकते हैं, गोल्गी अपैरेटस और सेंट्रोसोम का. ठीक है, तो आप 4 पॉइंट्स नोट कर सकते हैं. तो ये क्लियर हो गए आपको बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. आपके जो कॉमन चीज़ें हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ये चीज़ें सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं एंड दीज थिंग्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन बोथ. तो विद दिस योर चैप्टर एंड्स एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गया है चैप्टर.
बार फटाफट से हम इसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। आपको पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिंगल सेल होता है, तो दैट इज ट्रू। देन मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, दिस इज फॉल्स। ठीक है। अमीबा हैज इरेग्युलर शेप। आप सबको पता है अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, तो दैट इज व्हाई दिस वन इज आल्सो ट्रू। उसके बाद क्या करना है कि यू हैव टू मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल एंड व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म, यू हैव टू टेल दैट। ये आपने एक स्ट्रक्चर बनाया नर्व सेल का। उसके बाद फंक्शन क्या है नर्व सेल के, इज टू टेक मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन। जो आपकी सेंस ऑर्गन्स है वहाँ से ब्रेन तक मैसेजेस पहुँचाते हैं, ब्रेन टू सेंस ऑर्गन्स, एंड इट कंट्रोल्स all the body parts. Through brain it controls all the body parts. Then comes you have to write short on cytoplasm and nucleus of the cell. Cytoplasm, you people know that it is a fluid that fills the cell and occurs between the plasma membrane and the nucleus. Is it clear? जो भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, ये सब क्या होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। And cytoplasm helps in the exchange of materials between the cell organelles. उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है, एक स्फेरिकल सेंटर है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द सेल में। न्यूक्लियस किससे बना होता है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियस के, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर कोर। ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट करती है कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज, इसमें क्या होते हैं न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं ट्रांसफर को अलाउ करते हैं ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियोल्स जो कि क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है छोटी सी, एंड इट इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो और जिनमें क्या होते हैं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैरी जीन्स। जीन्स क्या करते हैं, जीन्स आपके इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स, दैट इज साइटोप्लाज्म। फिर एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं आपको। हमने अभी डिस्कस करें कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स आपके स्मॉल होते हैं साइज में, वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज। इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर जनरली स्मॉल इन साइज एंड दे आर यूजुअली लार्जर इन साइज। देन इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आपके यूनिसेल्युलर होते हैं, न्यूक्लियोल्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है आपका पुअरली डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जो भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी आप यूकैरियोट्स के लिख सकते हैं, उसका ऑपोजिट आएगा। क्रोमोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम्स। उसके बाद आपको बताना है कि सेल जो है आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, उसको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इट इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस। सेल्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ के, यही कारण है कि सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। जितने भी सेल्स हैं वो शेप में डिफरेंट होते हैं, साइज में, और जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में ही क्यों पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड है जो कि क्लोरोफिल स्टोर करता है और ट्रैप करता है सनलाइट को फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है।
दिस यू हैव टू फिल क्रॉसवर्ड. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है? दैट इज क्लोरोफिल. टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनल. ठीक है. उसके बाद लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, दैट इज जीन्स. उसके बाद है ग्रीन प्लास्टिड. ग्रीन प्लास्टिड क्या होते हैं आपके? क्लोरोप्लास्ट. फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज के कलेक्शन से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स. सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, मेम्ब्रेन. Empty structure in the cytoplasm is vacuole and a group of cells is tissues. Okay. So with this your chapter ends. Question answers की PDF I will send you. Keywords की I have already given. तो आप लोग अपनी कॉपीज कंप्लीट कर लेना. ठीक है. और आई होप आप सबको चैप्टर समझ आ गया. That's all for today. Thank you.